Hello students, today we are going to continue chapter 14 statistics. In this chapter we are going to start exercise 14. In this exercise we will find mode of group data. Mode of group data. What is mode? Mode is an observation which has maximum frequency. Mode is an observation which has maximum frequency. For example, there are some observation 3, 5, 7, 9, 5, 11, 12, 5, 3, 5, 10, etc. Here the observation 5 has maximum frequency. Okay, this observation has maximum frequency. So mode of this individual series is 5. Clear? Now there is ungrouped data. Ungrouped data, suppose karo 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the value of xi, and frequencies of these observations are, suppose karo 10, 15, 18, 6, 3, 9. Okay, so here maximum frequency is 80, has maximum frequency. Observation 3 has maximum frequency, so mode is 3. Clear? If the data is grouped, then there is a formula to find the mode equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Clear? L is lower limit of the model class. Here L is lower limit of the model class, and F1 is the frequency of the model class. F0 is frequency of the class preceding the model class. F0 frequency of the class preceding the model class, and F2 frequency of the class succeeding of the model class, and H is class size, means upper limit minus lower limit. Clear? Now let us start exercise 14.2. Now question number first of this exercise. The following table shows the ages of the patient and admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the data given.
compare and interpret the two measure of central tendency. So we have to find mean and mode of the data given and the compare and interpret the two measure of central tendency. So first we find the mode of the given data. तो सॉल्यूशन में देखिए, here मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23. तो मैक्सिमम 23 जो फ्रीक्वेंसी है इसके रेस्पेक्ट जो क्लास होगी 35 to 45, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी हमने 23 है, इसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास 35 to 45. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंडिंग जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी. क्लियर? अब लोअर लिमिट L, लोअर लिमिट क्या होगी? L is 35. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास is 35. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो F1 होगी. F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23. ये हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. क्लियर? F0 हो गई जस्ट इससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 21 हो गई. एंड F2 हो गई जो इसके जस्ट बाद क्लास की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 14. तो 14 हो गई हमारे पास F2. क्लियर? एंड क्लास साइज अपर लिमिट इज 35 एंड लोअर लिमिट इज upper limit is 45 and lower limit is 35. तो 45 minus 35 is 10. क्लियर? तो मोड इक्वल्स टू, एज वी नो, मोड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. Now placing the value of L, F1, F0, F2 and H. So L is 35, F1 is 23, F0 is F0 is 21, 2 into F1 23, F0 21 and F2 is 14 into H is 10. So 35 plus 23 minus 21 is 2 into 10 upon 46 minus 35. 2 into 23 is 46, 21 and 14 is 35. So 35 plus 20 upon 11. 46 minus 35 is 11. So 35 plus 20 को 11 से जब डिवाइड करेंगे 1.81, तो ये जाएगा 36.81. This is more. Okay. Now we have to find mean. Clear? Now we have to find mean. तो मोड हमारे पास आ गया, मोड इज 36.81. नाउ मीन तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? xi कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 5 प्लस 15 20 अपॉन 2 10, 15 प्लस 25 दैट इज 30 अपॉन 2 15, 25 प्लस 35 सॉरी 15 और 25 40 अपॉन 2 is 20, 25 35 60 अपॉन 2 30, then 40, then 50 and 60. तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो लोअर लिमिट 5 प्लस 15 अपॉन 2 is
15 plus 5 20, 20 upon 2 is 10, 15 plus 25 40, 40 upon 2 is 20, 25 plus 35 30, 60, 60 upon 2 30, 35 45 80, 80 upon 2 40, 45 plus 55 is 100, 100 upon 2 is 50, 55 65 120, 120 upon 2 is 60. Now let assumed mean h a equals to कोई मिड वैल्यू एज्यूम कर लो, सपोज करो दिस इज 30, a is 30 and h class size is 10. ठीक है, we are using step deviation method to find mean. Now ui is what is ui? xi minus a upon h. तो 10 को में से 30 लेस करो, -20 को 10 से डिवाइड करें -2, तो 10 minus 30 upon 2, तो -20 upon 2 that is -10. ओके, -10, फिर 20 minus 30 upon सॉरी तो 10 minus 20 upon 10 that is -20 upon 10 is -2. Clear? 20 now we calculate ui. तो 10 minus 30 upon 10 minus 20 upon 10 minus 2, 20 minus 30 upon 10 minus 10 upon 10 minus 1, 30 minus 30 upon 10 यानी कि 0 upon 10 is 0. Clear? और 40 minus 30 upon 10 10 upon 10 is 1, 50 minus 30 upon 10 20 upon 10 is 2, और 60 minus 30 upon 10 is 30 upon 10 is 3. Clear? After ui we calculate fiui. तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -11, 21 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15. ठीक है, तो माइनस के तो 23 हो गए एंड प्लस के हो गए 51 एंड 15 66, तो सिग्मा FIUI आ गया 43. क्लियर? नाउ x बार मीन इक्वल्स हो जाएगा a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू h. a is 30, sigma FIUI is 43, sigma FI 6 and 11 17, 17 and 21 38, 38 and 23 61, 61 and 14 75 and 5 is 80. This is 80. So 80 and h is 10. 0 से 0 cancel. 30 plus 43 upon 8. 8 5s are 40. 8 3s are 24. 8 7s are 56. 8 5s are 40. So 35.375. Clear? So mode is 36.81 and mean is 35 minus
37. Clear? So now it means the mean age of the patient is 35.37 years and maximum age of the patient in the hospital is 36.81 years. क्लियर? यानी कि जो पेशेंट जितने भी हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी मीन एज क्या है 35.37 और मोड मीन्स जो मैक्सिमम एज है पेशेंट की जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो कितना है 36.81 इयर्स. क्लियर? Now question number 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. तो lifetime given है, frequency given है, we have to find mode. Clear? We have to determine the model lifetimes of the components. Clear? So here maximum frequency is 61. So model class is 6280 61. So therefore model class 6280. Clear? Now mode equals to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. L is 60. Lower limit of the model class is 60. F1 frequency of the model class is 61. So and F0 frequency of the class preceding the model class 52 and this is 52 38. F2 is 38 preceding the class frequency of the class succeeding the model class. This is 38. So F2 is 38 and class size 80 minus 60 is 20. Class size is 20. तो mode equals हो जाएगा L is 60, F1 is 61, F0 is 52, 2 into 61, F0 is 52, F2 is 38 and class size is 20. So 60 plus 9, 61 minus 52 is 9, 9 into 20 and 122 minus 90. Okay, so 60 plus 9 into 20 upon 32. Okay, so 4 5 is 20 and 4 8 is 32. So 60 plus 45 upon 8. 45 upon 8 means 8 5 is 40, 8 6 is 48, 8 2 is 16, 8 5 is 40. So 65.625 hours. This is the model lifetime of the electrical components. Clear? Now question number 3.
The following data gives the information of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. We have to find model monthly expenditure and mean monthly expenditure. So first we find the model monthly expenditure. तो सॉल्यूशन में आप देखिए, since here maximum frequency is 40, is 40, so therefore model class 1500 to 2000, 1500 to 2000 model class. तो mod equals to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. So lower limit is 1500, F1 is 40, F0 is 24, 2F1 2 into 40 minus F0 is 24, F2 is 33. This is F2 and class size is 500. Difference upper limit minus lower limit is 500. Clear? 1500 plus 40 minus 24 is 16 into 500 upon 80 minus 57. तो 1500 plus 8000 अपॉन 10 में 7 लेस करेंगे और 7 में 5 लेस करेंगे 23, 8000 अपॉन 23. तो 8000 को 23 से डिवाइड करें, 23 3 जा 69. Now this is 11, 110, 4 जा 92, 18, फिर 0 उतारें and 5 6 7 8 7 जा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 16, 19.0, again 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 18, 6 0 8 23 2 जा 46. ओके, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 347.82, तो 1847.82. तो मॉडल एक्सपेंडिचर of 200 families is rupees 1847.82. Okay, now we have to find mean monthly expenditure. तो mean monthly expenditure के लिए first of all we will find XI. तो expenditure in rupees 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500 or 4500 to 5000. Now frequencies are FI. This is 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 and 7. So first we find XI. XI हो जाएगा 1000 plus 1500 upon 2, 2500 upon 2. This is 1250. फिर
3500 अपॉन 2 1750, फिर हो जाएगा 4500 अपॉन 2 2250, फिर 2750, फिर 3250, फिर हो जाएगा 3750, फिर हो जाएगा 4250, फिर हो जाएगा 4750. क्लियर. Let this is sigma fi is 200 families, because number of families is 200, and let assumed mean a equals to, तो मिड वैल्यू ले लो यहाँ 2750 and h is 500. Clear. Now we calculate ui. तो 1250 minus 2750 minus 1500 upon 500, तो -3, ऐसे ही -2 आ जाएगा, -1 ui हो जाएगा xi minus a upon h. 1250 में से 2750 लेस करेंगे, माइनस के 1500 अपॉन 500 -3 आ जाएगा, फिर 1750 में से 2750 लेस करेंगे, -1000 आ जाएगा, -1000 अपॉन 500 -2, ऐसे ही -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा. क्लियर. नाउ FIUI 24 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -72, 40 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -80, 33 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -33, 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28. क्लियर. देखिए ये हो गया माइनस के 2 और 3 5, क्लियर. 7 एंड 8 15 और 3 18, माइनस का 185, एंड प्लस के 8 8 14 16 4 20, 0 कैरी 2 2 2 जब 4 4 8 8 12 315 150. क्लियर. 150 minus 35, sigma FIUI is minus 35. तो x बार इक्वल्स हो जाएगा a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू h. a is 2750, sigma FIUI is minus 35, and sigma FI is 200 and h is 500. 0 0 0 कैंसिल हो गया, माइनस के 175 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2750 माइनस 80, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 5 0.5, 9 में 7 लेस करें 2, 14 में से 8 लेस करें 6, तो मीन मंथली एक्सपेंडिचर is rupees 2662.5. Clear. Now question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. Interpret करना है. We have to interpret the two measures, or we have to find mode and mean. So first of all, we are going to find mode. Since here maximum frequency is 10, so model class is 30 to 35,
is 10. So model class is 32 to 35. क्लियर? तो मोड इक्वल्स टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L, lower limit of the model class is 30. F1 is 10. Frequency of the model class. And F0 is 9. Frequency of the class preceding the model class. And 2F1, 2 into 10, F0 is 9, F2 is frequency of the class preceding the model, succeeding the model class, that is 3. And H is class size is 5. Upper limit minus lower limit, 35 minus 30 is 5. So 30 plus 1, 10 minus 9 is 1, 1 into 5, 20 minus 12, 9 minus 3 is 12. So 30 plus 5 upon 8, 20 minus 12 is 8. So 30 plus 0.6, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, 6 8 द 48, 6 2 जा 8 2 जा 16, 8 5 द 40, 8 6 जा 48, 2 बचेंगे, 2 से 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 20 में 16 लेस करेंगे 4, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो 30.625. क्लियर? Now mean the number of students. (15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, and 45 to 50, and 50 to 55. And frequencies, number of states, frequency Fi 3, 8, 9, 10, 3 and 0, 0, 2. Clear? Now first of all we find Xi. So 15 plus 20 upon 2, 35 upon 2, 17.5 and 22.5. देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 and 52.5. Clear? Now UI. Xi minus A upon H. So let assumed mean A equals to 37.5. Okay, and H class size is 5. ठीक है, ये सिग्मा Fi is 8, 3, 11, 20, 30 और 35. क्लियर? तो 17.5 में से 37.5 लेस करेंगे, माइनस के 20 अपॉन 5, माइनस का 4, ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. क्लियर? 3 को -4 से, अब नाउ FIUI 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12, 8 को -3 से -24, 9 को -2 से -18, 10 को -1 से -10, 3 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 0 को 2 से 0, 2 को 3 से 6. तो प्लस के तो 6 आ गए और माइनस के आ गए 8 and 4 12, 12 और 2 14, 1 2 3 2 5 1 6, माइनस के 64. ठीक है, तो x बार इक्वल्स हो जाएगा a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H. क्लियर? तो A is 37.5, सिग्मा FIUI is minus के 58, सिग्मा FIUI is minus 58, सिग्मा FI is 35,
and h is 5. तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 37.5 minus 58 upon 7, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, सॉरी 2 2 से 20, 7 2 जा 14.2, 6 7 8 जा 56. क्लियर. अब नाउ 8 में से 10 में से 8 लेस करेंगे 2, 4 में से 2 लेस करेंगे 2, और 7 में से 17 में से 8 लेस करेंगे 9, 29.22. दिस इज मीन. तो रेशो, मीन रेशो इज 29.22 and maximum ratio is 30.625. clear. Now question number 5. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Find the mode of the data. Runs scored, number of batsmen. Clear? तो solution में देखिए, here maximum frequency is 18. Is 18. So therefore model class 4000 to 5000. क्लियर. तो मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L is lower limit, that is 4000. F1 frequency is 18. Frequency of the model class is 18. This is F1 and this is F0. Frequency of the class preceding the model class, this is 4. 2 into F1 is 18, F0 is 4, and F2 succeeding frequency of the class succeeding the model class, this is F2 is 9, and class size is 1000. Upper limit minus lower limit. So 4000 plus 18 minus 4 is 14 into 1000 upon 2 into 18 is 36, and 4 minus 9 is minus 4 minus 9 is minus 13. So 4000 plus 14,000 upon 23. Now 14,000 को 23 से डिवाइड करें, 6 times 6 3 is 18, 6 2 is 12 or 1 13, 2 0 0 0. Now 9 times, 7 times, 8 times, 8 3 is 24, 8 2 is 16 to 18. Now 16.06 times, 7 times, 7 3 is 26 times, sorry, 6 3 is 18, 6 2 is 12 and 2 14, 12 0 5. तो ये हो जाएगा 4000 plus 608.65. This is 4608.65 answer. So mode of the given data is 4608.65. Now question number 6. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mode of the data. So these are the data and we have to find the mode of the given data. Okay. So since here maximum frequency is 20. So therefore model class is
40 to 50. This is model class 40 to 50. Clear? The mode is L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Clear? So this is F1. Lower limit of the model class is 40. F1 is 20. F0 is 12. Frequency of the class preceding the model class. This is 12. And 2 into 20, F0 is 20, F1 is 20, F0 is 12, and F2 frequency of the class succeeding the model class, that is 11, and H is 10. This is 10. So 40 plus 8 into 10. 20 minus 12 is 8. 8 into 10. Or 40 minus 23. 12 and 11 is 23. 40 plus 80 upon 17. 40 minus 23 is 17. So 40 plus 80 divided by 74 point, that is 70. So 44.70. The mode is 44.70. Answer. Clear?